सो गाइस आज हम खेल रहे हैं गेटिंग ओवर इट। आप कैसे हैं? स्टार्ट करते हैं। रुको, ये कुछ 2021 2000 पे आया था कुछ। और लो जस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज, शेयर कमेंट भी, लाइक भी प्लीज यार। हो रहा है। रुको, ये There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. हो जा नहीं यार, फिर से 10 बार अब तक गिर गया हूँ। 2 मिनट हुआ है अभी तक, मैं पूरा गिर गया हूँ। सच्ची में मैं पूरा गिर गया हूँ। 10 मिनट में मैं कुछ 500 टाइम्स गिर गया हूँ। तुम कमेंट करके बताओ, अभी तक मुझे याद नहीं है, कमेंट करके बताओ। और मैंने मेरा Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. यहाँ पर गोल्ड लेवल भी आता है। तुम्हें ऐसा 50 टाइम कुछ कंप्लीट किया तो तुम्हें गोल्ड वाला। Oof, sorry about that. उससे हमारा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सच्ची में कुछ नहीं होता है। 1000 रुपए 400 रुपए में गेम देखे कुछ नहीं होता है। पार्ट 2 भी आएगा या पार्ट 1 है, ठीक है। और थोड़ा पैसा है, देखो अभी टाइम 5:14 है। In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. Prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. अंकल जी, आप कैसे जाके उसमें पहुंचे और तुम्हें ये हैमर ये मिला? Oh, it happened again. Keep on trying, don't let it get to you. इतने ऊपर क्यों जाए? अभी बूढ़े बन रहे हो, चुप से बूढ़े बनो। क्या भी बन रहे हो? बोलो सुपरमैन, शक्तिमान बन रहे हो, चुप से रहना। ठीक है, कंप्लीट करने में फोकस करते हैं। चलो बैक टू आवर टॉपिक। रुको, हो गया यार, जस्ट मिस हो गया यार। This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. देखो
ऊपर से बहुत बदबू आ रहा। और ये मैया ड्राइवर के पास क्यों जाता है भैया? फोन से मुझे स्मेल आ रहा है। जाना जल्दी, जा जल्दी जा, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज। जल्दी जा। हो गया यार, मैं इसके अंदर फंस गया। हो गया। मेरा ब्रेन इंटेलिजेंट है, बनेगा है मेरा ब्रेन इंटेलिजेंट। देखो यहाँ थका गया हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। देखो यहाँ पर तो कचरा है, तो मैं भी हूँ। The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. और शेयर सब्सक्राइब प्लीज यार, प्लीज। हाय यार, एडिटिंग में, इसमें थंबनेल में ना कर दो प्लीज यार, प्लीज कर दो ना यार। फिर से गटर, बदबू वाली गटर किसने हक के रखा पता नहीं यार, पर गटर बहुत ज़्यादा यार। फिर से गटर स्मेल आ रहा है। 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूर होगा तभी वह स्मेल जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अंकल क्यों अंकल? जाओ अंकल, प्लीज अंकल। Get nasty over there, boy. Going down the road feeling bad. I'm going down the road feeling bad. Going down the road feeling bad, and I ain't going to be treated this way. Oh, like, share, Lay them blues up, boy, playing. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. अंकल बोला ना अंकल, रुको बेटा मैं जा रहा हूँ। अंकल जाओ अंकल, गिरवा जाना देख लो अंकल, टूट गया तो कुछ और। देखो अंकल, रुको बेटा सब्र करो। हाँ अंकल। और अंकल अब से माइनक्राफ्ट में आना है? हाँ बेटा मैं आऊँगा। ठीक है, तब अंकल को मैं माइनक्राफ्ट बाई करके दूंगा अपनी तरफ से। सिर्फ मुझे इस पे 1 लाख व्यूज, 1 लाख व्यूज बोल रहा हूँ, सॉरी 1K व्यूज, 1K व्यूज और 100 सब्सक्राइबर करवा दो, मैं बाई करके दूंगा। और अब तब से अंकल आएंगे। ए बेटा, सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे लोग करो, तभी मैं माइनक्राफ्ट पे आऊँगा। ठीक है, अभी देखो ये वीडियो, गेटिंग ओवर इट का मास्टर बनूंगा मैं। हाँ अंकल देखो, मैं देखता हूँ। करो अंकल, करो अंकल, करो ना अंकल, जल्दी से करो। हाँ उतना ही अंकल, करो बेस्ट ऑफ लक अंकल, इसमें देख कर करो। बेटा मैं फंस गया हूँ अंकल, आ गया अंकल। अंकल पर रुको अंकल, यहाँ पर स्लिप हो रहा है, देख के जाओ अंकल।
हाँ बेटा ठीक है चलो और कितना दूर है रुको रुको अंकल बेटा अभी के लिए इतना ही मैं और नहीं कर सकता हूँ अभी ट्राई कर रहा हूँ इतना ही तुम इंट्रो करके कुछ और करो अभी मेरा मूड गया है ठीक है अंकल अभी हमारे वीडियो के लिए इतना ही पार्ट 1 अभी है कल या परसों कुछ आएगा देख लो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड पीस The soul would have no rainbow had the eyes no tears. John Vance Cheney. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis.